Good morning, all of you. Today we are having a new lesson here, that is class 7 water. Water दुनिया की वो अमूल्य वस्तु जिसके बिना लाइफ की कल्पना करना भी अपने आप में बेमानी है। बिना वाटर के हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम लाइफ को सस्टेन कर पाए। तो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि वाटर क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से इसको प्रॉपर वे में हम यूज कर सकते हैं। बट इस लेसन के अंदर वी विल गेट टू नो अबाउट द व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द वाटर। ओशन वाटर है, रिवर वाटर है, अर्थ के अंदर जो वाटर है, तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सुनिएगा। ब्लू प्लैनेट में पहला टॉपिक है, लेकिन ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं कि अर्थ ही पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर वाटर पाया जाता है। अभी तक हो सकता है और प्लैनेट्स पे भी हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ वाटर, Earth looks like a blue color whenever we see from that space. So that's why it's given a name, the blue planet. Next, हाइड्रोस्फीयर का टॉपिक है। हाइड्रोस्फीयर क्या कहलाता है? अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर बॉडीज पाया जाता है और वाटर वाला इलाका पाया जाता है, उसको हम लोगों ने एक नाम दिया, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। चाहे वो वाटर किसी भी शेप में हो, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वाटर साइकिल क्या है? जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर से वाटर को दोबारा अलग अलग डिफरेंट शेप्स में जाना और फिर वापस वाटर का आ जाना, दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसके अंदर सबसे पहले हम अगर वाटर साइकिल की बात करें, वी विल गेट टू नो अबाउट द इवोपरेशन। आपको पता है अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, रिवर्स के अंदर है, सी के अंदर है, और बहुत जगहों पे पानी और हम यूज भी करते हैं, कपड़े धोना, कुछ भी करना। तो उसके अंदर क्या होता है? इवोपरेशन होता है। सूरज की रोशनी जब भी किसी भी वाटर बॉडी पर पड़ती है, किसी भी गीली चीज पे पड़ती है, तो क्या करना शुरू कर देती है? इवोपरेट करना शुरू कर देती है। तो उसके अंदर का जो वाटर होता है भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और ऊपर उड़ने के प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। वो छोटी छोटी भाप की बूंदे आपस में टकरा के छोटी बड़ी बड़ी सी बूंदे बन जाती हैं। बहुत सारे भाप की बूंदे आपस में जब एक साथ मिल जाती हैं तो शेप ले लेते हैं किसका? बादल का। ठीक है। और वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोटिंग करती रहती है एयर के अंदर। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है सैचुरेशन का। जब पानी को छोटी छोटी बूंदे जो बादल के रूप में इधर घूम रही होती है, एक के ऊपर से एक गिरने लगती है, तो उसका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एयर उसको होल्ड करके नहीं रख पाती। तो फिर काम होना शुरू हो जाता है प्रेसिपिटेशन का। तो फिर वो क्या करती है? अर्थ के ऊपर ही वापस बारिश के रूप में फिर से गिर जाती है। दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। और ये एक पूरा सर्कल पूरा हो जाता है किसका? वाटर साइकिल का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट, इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वेव्स के बारे में बता दूं। वेव्स एक्चुअली में है क्या? वेव्स जब हवा फ्लो करती है, हवा जब तेजी से बहती है, तो जो समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, या सी का पानी है, या ओशियन का पानी है, वो क्या करती है? हवा उस पानी को पुश करके आगे की तरफ ले जाती है। जितनी तेज हवा होती है वैसे ऐसे फ्लो करके चलती हुई चली जाती है, और यही होता है पानी का वेव। आप समझते होंगे कि पानी अपने आप चलता है, पानी अपने आप नहीं चलता है। उसको क्या करता है? एयर का प्रेशर। आपको पता है एयर हर जगह जा सकती है। जब एयर चलती है और पानी के ऊपर से एयर फ्लो होती है, तो वो पुश करती है वाटर को, जिसकी वजह से इस तरीके से लहरें चलती है, इसको हम लोग वेव कहते हैं। ठीक है। अब वेव के अंदर कुछ पॉइंट समझने वाली चीज है। ठीक है। क्रीस्ट, ट्रो, वेव हाइट और वेव लेंथ। ठीक। उससे पहले मैं आपको जरा एक टॉपिक हमारा छूट गया था, दैट इज द फ्रेश एंड सैलिन वाटर। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसको आप यूज करते हो पीने के लिए और अपने उन चीजों के लिए जहां पे आप उसको कैसे न कैसे करके कंज्यूम करो। आपको पता होना चाहिए कि 100% वाटर में से केवल 3% वाटर ही आपके पास फ्रेश वाटर के रूप में है, और उसके अंदर में भी बहुत 0.something% जो कि आपको लिक्विड शेप में मिलता है, जिसको आप पीते हैं। ठीक है। फ्रेश वाटर का यूज क्या होता है, क्या आप सबको पता है, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं सैलिन वाटर के ऊपर। सैलिन वाटर के अंदर क्या है? अर्थ के ऊपर जितना वाटर पाया जाता है उसका 97% क्या है? सैलिन वाटर यानी खारा पानी है, जिसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो यही है। और नमक की जो मात्रा होती है समुद्र के पानी में, ओशन के पानी में ज्यादा होता है। और आखिरकार जितनी भी वाटर बॉडीज है या बारिश का पानी है, कहा जाता है सारा का सारा उसके अंदर ही चला जाता है। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग वेव्स की। वेव्स पे आते सबसे पहले क्रिस्ट की बात करते हैं।
फ्लो की बात करेंगे, वेव हाइट की बात करेंगे और वेव लेंथ की बात करेंगे। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, इस तरीके से लहरें चलती है, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, अगर ऐसे लहर चल रही है तो जो नीचे वाला हिस्सा आता है उसको टो कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्रिस्ट कहते हैं या क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेव हाइट की। जो एक क्रिस्ट से लेकर दूसरी क्रिस्ट तक के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड द वेव हाइट। ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड द वेव हाइट, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको वेव लेंथ कहते हैं। तो ये है आपका वेव्स। एक छोटा सा वीडियो डाल रहे हैं वेव्स को समझने के लिए, उसको आप सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। Hi guys! Do you know what sea waves are and where they come from? Let's find out. Notice how the ball rises and falls on the waves. Hence, the surface of the sea, when it is wavy, behaves the same way. Parts of the water surface rise and fall. We can create a wave model ourselves. For this, we need a simple rope. Together with a friend, take the rope by the ends and move away from each other so that the rope sags but does not touch the ground. And now, only one participant in the experiment should raise and lower the end of the rope. The second participant simply holds the rope. Look! We've just created a wave! A gymnast creates waves in a similar way when performing with a ribbon. She simply moves the handle up and down or left and right. Let's get back to our rope. The end of the rope that we hold in our hand rises and falls. The scientific name for this is vertical oscillation. Since all parts of the rope are connected to each other, lifting one of them causes the next one to rise, but with some delay. The end of the rope in our hand goes down and again draws the following fragments of the rope with it. The resulting oscillation spreads into the distance. Such a propagation of the oscillation is called a wave. If you gather a group of friends, you can demonstrate this wave yourself. Now let's create waves on the water by throwing a rock on the calm surface of this pond. Look, there are circles on the water. These are the same waves as you see in the sea, only smaller. The rock pushed a certain amount of water down when it fell, and the level of the water surface in this place decreased. But the water has not disappeared. It has simply been displaced from its current position, causing the nearby surface to rise. The surface of the water then returns to its original level, and the wave spreads further. At the very spot where the stone fell, the water is not just returning to its original level, but it is also rising higher. Then it goes down again, and so it continues for a while with a decrease in the amplitude until the surface of the water stops. After that, the last circles will decrease and the waves will disappear. So how are big waves in the sea formed? Of course, no one threw a huge rock into the water. The role of the stone in this case is played by the movement of air, more specifically, the wind. Air presses on the surface of the water, and with the wind this pressure is constantly changing. Therefore, the surface of the water begins to oscillate, and waves arise that propagate into the distance.
से टाइड जिसके अंदर क्या होता है, ये भी हवा की तरह वेव्स क्या होता है, थोड़ी नीचे चलती है, टाइड्स की ऊंची ऊंची लहरें होती है, सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है। इसका कारण क्या होता है कि अर्थ, सन और मून, ये तीनों के तीनों ही एक लेंथ में होते हैं जब फुल मून का टाइम होता है। उस समय लहरें काफी ज्यादा ऊंची होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, फुल मून में। फिर बात करेंगे नीप टाइड की। नीप टाइड क्या होता है, यहाँ पर लहरें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल में तीनों प्लैनेट होते हैं, अर्थ, सन और मून। जब 90 डिग्री में होते हैं, हाफ मून होता है, ऑन दैट टाइम डीप टाइड आता है, जहां पे क्या होता है, टाइड्स की पावर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, एक वीडियो दिखाते हैं, उससे समझने की कोशिश कीजिए। Let's go to the next topic, tides. So what is a tide? It is basically rise and fall of the sea level. It occurs once or twice in a day. And the reason behind that is due to the attraction of the sun and the moon. Now I'll explain how tides work. There are many factors that are involved in creating a tide. However, three of them are important. They are the sun, the moon and the earth. All these three huge bodies have different gravitational pull, which creates a tide in the ocean. But in general, if you see, the study of tides, it is a very complex subject. It's very confusing. Anyhow, as I said, the three major factors involved in creating tide are the moon, the earth and the sun. And the gravitational pull of all three bodies creates tide. As we know that the earth is quite larger than the moon. That's why the moon orbits around the earth. But then if you see, the earth is smaller than the sun. The sun is enormous. That's why the entire solar system revolves around the sun. That means smaller bodies orbit around the larger one, because the larger body exerts a gravitational pull on the smaller one. I hope so far it's clear. Now imagine this is Earth. The moon is right above it. Both Earth and the moon will exert some gravitational pull. Now we know that everything on Earth is grounded, and it is because of the gravitational pull of the Earth. For example, you and I are standing. If we jump, we will fall back to the same place. If you drop a light feather, it will fall due to the Earth's gravitational pull. Now when it comes to ocean, water is fluid, and fluids move more easily. So when water on Earth in a particular region, if it is directly beneath the moon, then the water gets pulled by the gravitational force towards the moon. And that creates a bulge, meaning a tide on the surface of the ocean. And on the other side of the Earth, there is another bulge in the ocean water. And this happens because this side of the water is farther away from the moon and the centrifugal force that counterbalances gravity on Earth. So there are two tidal bulges that are created on opposite sides of the Earth. One is due to the moon's gravitational force, and the other is due to the centrifugal force of the Earth. If you don't know what is centrifugal force, I'll just tell you quickly. Imagine gravity as a rope that pulls everything to the center of the Earth. And centrifugal force is the outward force that counterbalances the gravity. Anyhow, you just need to remember that there are two tidal bulges on opposite sides of the Earth. And both the side of the Earth where there is bulges, you will find high tide. And on the side that is right angle to the moon, you will have low tide. It is a bit confusing, right? But that's how it is. Now this all happens only when there is moon and the Earth. What about the sun? As I said, the sun is bigger than all the celestial bodies in a solar system. That means the sun will exert more gravitational pull, and it has influences on the tides as well. However, the sun's gravitational pull can do two things. Either it will increase the moon's gravitational pull on Earth, or it will diminish the moon's gravitational pull on Earth. When the Earth, the moon and the sun are in a straight line, the sun is behind the moon. Therefore, it enhances moon's gravitational pull, and that creates much higher tides. They are called spring tide. But when the sun and the moon is at right angle, the sun diminishes the gravitational pull of the moon on Earth, and that creates low tides. They are called neap tides. So this is how tides are formed. ओशन करंट है क्या? जब ओशियन की लहरों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज
के ऊपर जब हवाएं, चाहे पोलर रीजन से हवा आती है, चाहे ट्रॉपिकल रीजन से आती है, चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन से आती है, तो ये एक तरीके का हवा चेंज कर देती है, करंट पैदा होता है जो कि आपस में मिलता है, जिसका बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ड्रिफ्ट है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है। अब ये ड्रिफ्ट, वार्म और कोल्ड करंट क्या होते हैं, इसको आपको मैं बुक की मदद से समझा देता हूँ। जैसे कि ओशन करंट के बारे में क्या बताया आपको, द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन ऑन द ओशन सरफेस इज कॉल्ड एन ओशन करंट। ठीक है, हमने बात की थी ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है एट अ प्लेस, एक जगह पे ओशन करंट्स आर वेरी ब्रॉड, ओशन करंट्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दे मूव स्लोली, फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं वार्म करंट्स की। देखो साफ साफ आपके बुक में लिखा है कि द ओशन करंट दैट मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल कैरी वार्म वाटर एंड हेंस दे आर कॉल्ड वार्म करंट्स। जब हवा क्या करती है, मूव करती है, कहां से, इक्वेटोरियल रीजन से और पोल्स की तरफ कैरी करके जाती है, तो वहां पे वार्म करंट होता है, और जब इसका अपोजिट होगा तो उसको कोल्ड करंट कहेंगे। ठीक है, तो इसको एक वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इफेक्ट देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट क्या होता है। जब ये इफेक्ट होता है, गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं, तो ओशन के किनारे रहने वाले जो भी इलाके होते हैं, वहां पे वाटर या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। जो लोग शिपिंग करते हैं, शिप से किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा फायदा होता है। जब चेकआउट करते हैं ओशन करंट की वजह से हवा या तो तेज चल रही है या कम चल रही है, तो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करके अपने हिसाब से जाने की कोशिश करते हैं, ये एक फायदा होता है। फिशर, ओशन करंट की वजह से जब इफेक्ट पड़ता है तो मछलियां जो नीचे होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, फिशरमैन को बहुत फायदा होता है। और वेदर चेंज, कंडीशन चेंज, ज्वार भाटा आना और बहुत सारी चीजें होती है, इसको एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करें। ठीक, In 1992, a cargo ship carrying bath toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. The topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing currents to speed up, slow down, or change direction. Ocean currents fall into two main categories: surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water, while deep ocean currents mobilize the other 90%. Though they have different causes, surface and deep ocean currents influence each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving. Near the shore, surface currents are driven by both the wind and tides, which draw water back and forth as the water level falls and rises. Meanwhile, in the open ocean, wind is the major force behind surface currents. As wind blows over the ocean, it drags the top layers of water along with it. That moving water pulls on the layers underneath, and those pull on the ones beneath them. In fact, water as deep as 400 meters is still affected by the wind at the ocean's surface. If you zoom out to look at the patterns of surface currents all over the Earth, you'll see that they form big loops called gyres, which travel clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. That's because of the way the Earth's rotation affects the wind patterns that give rise to these currents. If the Earth didn't rotate, air and water would simply move back and forth between low pressure at the equator and high pressure at the poles. But as the Earth spins, air moving from the equator to the North Pole is deflected eastward, and air moving back down is deflected westward. The mirror image happens in the southern hemisphere, so that the major streams of wind form loop-like patterns around the ocean basins. This is called the Coriolis effect. The winds push the ocean beneath them into the same rotating gyres, and because water holds on to heat more effectively than air, these currents help redistribute warmth around the globe.
Unlike surface currents, deep ocean currents are driven primarily by changes in the density of seawater. As water moves towards the North Pole, it gets colder. It also has a higher concentration of salt, because the ice crystals that form trap water while leaving salt behind. This cold, salty water is more dense, so it sinks, and warmer surface water takes its place, setting up a vertical current called thermohaline circulation. Thermohaline circulation of deep water and wind-driven surface currents combine to form a winding loop called the global conveyor belt. As water moves from the depths of the ocean to the surface, it carries nutrients that nourish the microorganisms which form the base of many ocean food chains. The global conveyor belt is the longest current in the world, snaking all around the globe, but it only moves a few centimeters per second. It could take a drop of water 1,000 years to make the full trip. However, rising sea temperatures are causing the conveyor belt to seemingly slow down. Models show this causing havoc with weather systems on both sides of the Atlantic, and no one knows what would happen if it continues to slow or if it stopped altogether. The only way we'll be able to forecast correctly and prepare accordingly will be to continue to study currents and the powerful forces that shape them. What about the creatures that adapted to survive in these swirling seas? Take a closer look at some truly fascinating ocean dwellers with these two animations.